Hello students, in previous class you have studied acute rheumatic fever, definition of ARF, its pathophysiology and clinical manifestations. जो clinical manifestations है that are grouped into three classes, that is first one are the major manifestations, minor manifestations and essential manifestations. In major manifestations there is carditis, also polyarthritis. Another one was the chorea, also subcutaneous nodules, erythema marginatum. These are the signs and symptoms that are included in the major manifestations of ARF. ARF में पहले ही आप लोगों ने देखा था carditis, polyarthritis, chorea, subcutaneous nodules and erythema marginatum. That means carditis हम किसको बोलते हैं? The early manifestation होती है rheumatic fever की as pancarditis. That means there is pericarditis, myocarditis and endocarditis. In polyarthritis there is जो joints है that are involved and the joints जो थे that get inflamed, swollen and tender. Also joints are associated with pain. Chorea is another symptom. chorea किसको बोलते हैं? chorea जो है when nervous system gets involved वहाँ से क्या होती है? There is involuntary movements, that is known as the chorea. या subcutaneous nodules. Subcutaneous nodules क्या होते हैं? Subcutaneous nodules ये small nodules होते हैं, swelling होती है which persist for a long period. Another one is the erythema marginatum. Erythema marginatum क्या होता है? It's a pink macular non-itching rash. Rash होता है pink macular but non-itching. That is the erythema marginatum. Erythema marginatum जो है ये second rash है, pink macular rash है, but जो ये rash होता है इसमें itching नहीं होती है. These are included in the major manifestations. Now the minor manifestations of ARF. Minor manifestations. In minor manifestations, there is clinically there is fever. Patient is having fever, arthralgia, previous attack of rheumatic fever, also laboratory में हम क्या देखते हैं? Laboratory there is ECG changes, anemia, elevated ESR and presence of C-reactive protein. These are minor manifestations. Minor manifestations में क्या होता है? जो चाइल्ड होता है उसको फीवर होता है. आर्थ्रेल्जिया हम किसको बोलते हैं? जब पेन होती है इन द जॉइंट्स में, that is known as the arthralgia and that is associated with arthritis. This is found in about 50% of cases. Arthralgia. Also, patient is having previous attack of rheumatic fever. या ECG changes आते हैं. ECG changes भी usually इसमें क्या होता है? Usually prolonged
PR interval and QT interval is seen. ECG changes आती है. इसमें क्या होता है, जो PR interval होता है वो prolong हो जाता है and QT intervals also. Anemia, child is having anemia, elevated ESR erythrocyte sedimentation rate जो है वो increase हो जाती है and there is presence of C-reactive proteins. These are the minor manifestations. Also other manifestations that is included in the essential manifestations या essential criteria या essential manifestations. In essential manifestations there is, इसमें क्या क्या आता है, essential manifestations में elevated anti-streptolysin, essential criteria में anti-streptolysin जो है that is elevated anti-streptolysin titer and positive throat swab culture. Essential criteria, in essential criteria जो ये एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर होता है that means कि upon titration ये elevate हो जाता है. This reveals the streptococcal infection. और जो throat swab cultures है वो positive आते हैं. Also जो इसमें other manifestations होती है, other manifestations that includes precordial pain, abdominal pain, fatigue, loss of body weight, epistaxis, anemia, sweating, tachycardia, etc. These are the other manifestations of acute rheumatic fever. Now the diagnostic evaluation. How is the disease confirmed? Disease को कैसे confirm किया जाता है? Disease is confirmed by the sign and symptoms. जो disease है उसको confirm किया जाता है, पता चलता है by sign and symptoms. Usually हम क्या देखते हैं इसमें, जो हम अभी हमने जो देखा above mentioned जो symptoms है that confirms the diseases. Usually हम लेते हैं there is presence of diagnostic evaluation is done by the presence of two major manifestations. Or one major and two minor criteria. That is essential for diagnostic purpose. Usually जो हमने देखी इसमें sign and symptoms that are classified into three classes. That was the first one was the major manifestations,
माइनर मैनिफेस्टेशंस एंड थर्ड वन वाज द एसेंशियल मैनिफेस्टेशंस। इसमें हम क्या देखते हैं, अगर पेशेंट में होगी टू मेजर मैनिफेस्टेशंस, टू मेजर सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, दैट कंफर्म्स द डायग्नोसिस। या अगर उन मेजर मैनिफेस्टेशन में, मेजर साइन एंड सिम्टम्स में एक प्रेजेंट होगा और माइनर सिम्टम्स में दो प्रेजेंट होंगे, दैट आल्सो कंफर्म्स द डायग्नोसिस। Another one is the artificial subcutaneous nodule test। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं इसमें, दैट आर मेजर मैनिफेस्टेशन। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जो इनमें होते हैं दैट आर द मेजर मैनिफेस्टेशन। इन्हीं को टेस्ट किया जाता है, आर्टिफिशियल टेस्ट। इससे भी पता चलता है ARF। Also chest X-ray is done to show cardiomegaly and heart failure. Electrocardiography is also done in this condition to diagnose the disease, and blood examination, blood test is done। blood test जो है इसलिए किया जाता है for ESR, यूजुअली इसमें elevated ESR होता है, ASO टाइटर या WBC काउंट। ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में हम क्या क्या देखते हैं, ESR चेक किया जाता है। ESR जो है वो एलिवेटेड होता है, ASO टाइटर, दैट मीन्स कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O टाइटर। दिस confirms the diagnosis and WBC count, usually leukocytes count इसमें किए जाते हैं। This is done for the diagnosis of ARF। Now the treatment। ट्रीटमेंट ऑफ ARF, जिसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है यूजुअली ARF जो है इट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन followed by streptococcal infection, so that is a bacterial infection, so antibiotics are given। Antibiotics are given to control the infection। most commonly जो इसमें drug of choice जो है that is the penicillin। Penicillin is the drug of choice। Also, in addition to this, another antibiotics are also prescribed, that is erythromycin is used as a substitute। erythromycin is used as a substitute क्योंकि कुछ चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिनमें पेनिसिलिन से क्या हो जाती है, एलर्जी होती है, पेनिसिलिन से रिएक्शन होती है, तो इनमें हम क्या करते हैं, पेनिसिलिन की जगह इनमें erythromycin एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है। Also salicylates are prescribed। salicylates are prescribed। salicylates किस लिए दिए जाते हैं, salicylates जो है ये दिए जाते हैं टू कंट्रोल द inflammatory process, to control the inflammatory process and also to relieve pain and fever। salicylates are given। other medications भी इसमें दिए जाते हैं, that is according to the symptoms to treat dyspnea, edema, anemia, तो इसके लिए अदर मेडिकेशन यूज की जाती है। इन ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है दैट इज द पेनिसिलिन। salicylates are also prescribed to control the inflammatory process and pain and fever। अदर मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं किस लिए, डिस्पेनिया, एडिमा या एनीमिया होता है। Now the
Management. In management, first point is the bed rest is important. Bed rest is important. Bed rest जो है that is the important of children with rheumatic fever. It is needed for at least 6 to 8 weeks. Till rheumatic fever जो है वो disappear हो जाएगा. Another point is the nutritional needs जो है that should be met in management. Nutritional needs. So nutritional diet should be provided to the patient with sufficient amount of protein, vitamins and other micronutrients. There is no salt restriction. Salt restriction इसमें नहीं होती है, लेकिन salt restriction unless क्या CCF ना हो. If there is CCF present, congestive cardiac failure, so salt is restricted. Also, in nutrition, spicy food should be avoided. Spicy food जो है that should be avoided. In addition to this, the development and educational needs should be met. Another point, developmental needs and educational needs. That should be met by recreational and educative plays among children. Also, children's में क्या होता है इन sign and symptoms में वहाँ पे कोरिया होता है. That means कि involuntary movements होते हैं. उस टाइम क्या करना है, ज़्यादा ख्याल रखना होता है चिल्ड्रन. सो द चिल्ड्रन जो है इन कोरिया, चिल्ड्रन जो है उनको प्रोटेक्ट करना होता है टू गेट इंजरीज, फ्रॉम गेटिंग इंजरीज. प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम गेटिंग इंजरीज. या इनमें क्या प्रोवाइड करने होते हैं, साइड रील्स और बेड प्रोवाइड करने होते हैं. ज्यादा अटेंशन देना होता है चाइल्ड की तरह, कांस्टेंट अटेंशन है एंड आल्सो सपोर्ट. Another point is the in management, that is the parents should be advised. Parents जो होते हैं that should be advised. Parents are also advised about the follow up of antibiotics to prevent the subsequent attacks. In prevention, it is necessary to control and to continue the prophylactic treatment. Prevention, जो prophylactic treatment है, it should be continued to prevent subsequent attack and to prevent further cardiac damage. Also, screening program for group A streptococcal throat infection.
help us to find out the positive cases. By this, we can manage the ARF. These are the some points that are included in the management. This concludes the topic.